A suicide terror attack was conducted by a Pakistan-based terrorist organization, the Jaish-e-Mohammed. The forum strongly rejected Indian claim of targeting an alleged terrorist camp near Balakot and the claim of heavy casualties. In an intelligence-led operation in the early hours of today, India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. एक act of aggression है, जारियत है पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान respond करेगा. The facility is located in thick forest on a hilltop far away from any civilian presence. पाकिस्तानी इंटरनेशनल मीडिया को मौके पे ले जाया जाए ताकि वो खुद मौका मुलाहिजा करे और जो हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा है उसको बेनकाब करे. The government of Pakistan had made a solemn commitment in January 2004 not to allow its soil or territory under its control to be used for terrorism against India. वजीर आज़म का स्टेटमेंट जो 21 फरवरी को जारी हुआ, जिसको न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरूनी दुनिया ने सराहा और इसलिए सराहा कि उसमें वजन था, उसमें माकूलियत थी, उसमें एंगेजमेंट की बात थी.